Hi everyone, welcome to today's video. So today in this video, I'll be talking about 10 important things that you should be doing once you land to Canada, as soon as you land to Canada within your first week. So let's get started without any delay. So number one is SIN, which is Social Insurance Number. Social Insurance Number is a 9-digit number which is given by government to all the residents of Canada. आपके पास वो होना चाहिए to access various government's policies or access various government programs. तो आपके पास SIN number होगा तो you will be identified as a resident of Canada and then you can apply in certain programs और कुछ ऐसे benefits होते हैं जो Canadian government आपको देती है being a resident of Canada. तो you will be able to access all those. Now, SIN is very important and very confidential. So once you get your SIN number, ideally you should never ever in any situation, you should never ever share with anyone else unofficially. If you are sharing with someone else, be sure that there is no other choice and that organization that is asking for your SIN number is genuine and they are not going to use your SIN for any other purposes. So क्या होता है कि आपके SIN नंबर से बहुत सारे स्कैम्स होते हैं कनाडा में या फिर कनाडा से बाहर जो कि SIN नंबर को एक्सेस करके और हैक करके यूज करके आपके नाम पे वो सारे स्कैम्स हो रहे होते हैं. तो देयर आर चांसेस कि आपका SIN नंबर देन गवर्नमेंट के नज़र में आ जाए और देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिपरकशंस फॉर दैट. सो इट्स बेटर कि आप मिसयूज ना होने दें अपने SIN नंबर का. डोंट शेयर इट विथ एनीवन अनऑफिशियली. So before even getting your own address here, that means अगर आपके पास अपना अपार्टमेंट नहीं होता है जो कि आप जैसे लैंड करते हैं आपके पास अपना कोई एड्रेस नहीं होता है, but if you have any temporary address that you know that you will be residing on that address for a certain amount of time, you can even apply for SIN number on the airport only. And if you don't have any address here, that means you don't have any temporary address or you don't know whether you will be living on that address for 1 week, 2 weeks, 3 weeks, then no worries, you can just go to your hotel or your Airbnb wherever you have booked your stay and then go to any Service Canada office and वहाँ पे आप apply कर सकते हैं in person and there is no appointment needed क्योंकि हमेशा भीड़ नहीं होती. तो you can just select any day, any weekday और आप वहाँ जाके और वहाँ अप्लाई कर सकते हैं SIN का. इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस. वी अप्लाइड SIN इन वैंकूवर एंड इट वाज वेरी स्मूथ प्रोसेस और बहुत आराम से हमारा सारा प्रोसेस हो गया एंड बहुत जल्दी SIN हमारे पास डिलीवर भी हो गया. Now let's talk about the second important thing that you have to do in your first week is buying a SIM card. So SIM card is very important. So what we did, I mean there is a mistake that we did. So गौरव ने ज्वाइन किया अपना ऑफिस, वहाँ से उसको SIM भी मिला और वहाँ से उसको मोबाइल भी मिला. लेकिन मेरे लिए क्या हुआ कि I was not actually joining in a week or 2 of landing in Canada. तो मेरे पास मेरा इंडिया का ही SIM था और मेरे पास इंडिया का ही सब कुछ था. तो what happened was Gaurav was in his office, मैं कहीं बाहर गई थी and then all of a sudden my internet was not working because it was India's number, so I didn't want roaming charges to apply on my internet. बहुत महंगा हो जाता. So मेरे पास कुछ नहीं था. No calling facility, nothing. So it was very hectic for me in initial few days. तो हमने realize किया after 2 to 3 days that we should get or we should buy a SIM card as soon as possible for me as well. तो हमें ये लगा था कि गौरव के पास है ना, हम कहीं भी जाएंगे मैप यूज़ करेंगे, इंटरनेट उसमें होगा तो एवरीथिंग विल बी फाइन. बट व्हाट इफ वो ऑफिस में होता है और मुझे यहाँ पे घर पे रह के और कुछ काम करना, कहीं बाहर जाना है, देन आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. बेस्ट थिंग इज टू बाय अ SIM कार्ड एज सुन एज पॉसिबल क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई भी करोगे और उसमें आपका लोकल नंबर चाहिए होता है. एंड ऑल्सो टू गेट अ जॉब, इफ़ यू आर नॉट कमिंग हियर इन कैनेडा विद अ जॉब, आपको जॉब अप्लाई करना पड़ेगा. For that also you need a SIM card so that recruiters or the organization recruitment companies can call you. So there are certain companies that offers a very good plan as well with you can buy a cell phone as well with along with that plan. तो आपका बहुत थोड़ा सा monthly installment लगता है, आपको cell phone with SIM मिलता है. Otherwise if you have a cell phone you don't need to buy a cell phone separately or you don't want a plan with cell phone, you don't need to do that. आप एक सिंपल SIM कार्ड भी ले सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल रॉजर्स, कूडो, फाइडो, there are a lot of different organizations or companies that offer a plan.
सो कुछ कंपनीज होती हैं जो थोड़ा हाई लेवल का प्लान देती हैं, जो थोड़ी महंगी होती हैं, फॉर एग्जांपल रॉजर्स एंड कूडो, फाइडो इज सम कंपनीज और फ्यू कंपनीज जो कि आपको थोड़े सस्ते प्लान्स देती हैं विद लिमिटेड कॉल फैसिलिटीज और लिमिटेड इंटरनेट, बट दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. सो जस्ट एक्सप्लोर, रिसर्च बिफोर कमिंग हियर, एंड देन जैसे आप लैंड करते हो इन अ डे और टू, just buy a SIM card. The third most important thing to do is open a bank account and get a credit card. Getting a credit card here is very important because you get your credit score. If you build a credit score, you will be able to buy certain things. You will be able to buy a house. You will be able to manage your loans or take a loan on anything. So credit score build करने के लिए credit card is very important. So आपको अपने कंपनी, जो भी आप कंपनी ज्वाइन करोगे उसमें भी अपना बैंक अकाउंट देना पड़ेगा so that they can transfer your salary. So आपको एक चेकिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, if possible open a savings account as well, और एक्सप्लोर कर लो आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए बैंक से. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आर you have to have your checking account, you have to have your credit card. And there are various banks here in Canada like CIBC, Bank of Montreal, Scotia, RBC, TD. They offer a variety of newcomer plan. तो उसमें क्या होता है, जैसे आप न्यू इमिग्रेंट्स हो तो दे विल ऑफर यू, इफ यू ओपन एन अकाउंट विद अस, विल बी गिविंग यू $350 इन योर फर्स्ट मंथ, और फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शंस के बाद आपके पास $350 और $600 बेस्ड ऑन व्हाट बैंक एंड व्हाट इज द डिफरेंट प्लान दैट दे आर ऑफरिंग, वो आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं. Fourth important thing to do is getting a health card. So health card is very 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 important in Canada. तो आप किसी भी प्रोविंस में रहते हो, उस प्रोविंस का एक हेल्थ कार्ड होता है जो कि आपको चाहिए होता है in order to get medical facilities. For example, यहाँ मेडिकल बहुत महंगा है, यहाँ पे आपके सिर्फ इंश्योरेंस से कुछ नहीं होता है, तो आपको यहाँ जो हेल्थ कार्ड है वो हेल्प करेगा इफ़ यू गेट इल, और आपको डॉक्टर विजिट चाहिए या फिर आप डिफरेंट टेस्ट, आपको लैब टेस्ट कराने, उन सब में जो आपका हेल्थ कार्ड है वो हेल्प करता है. एवरीथिंग विल बी फ्री फॉर यू, क्योंकि ये कनाडा गवर्नमेंट हर डिफरेंट प्रोविंस में अलग अलग हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करता है, सो दैट ऑल द रेजिडेंट्स गेट फ्री हेल्थ checkups and free health tests across Canada. So if you're landing to Ontario, you need to get your OHIP, which is Ontario Health card. Just download OHIP form and go to any Service Canada सेंटर्स, वहाँ पे आप जाके अपना एप्लीकेशन डाल सकते हो. सो पहले हमेशा वेट करना होता था, फॉर एग्जांपल 3 months और 6 months टू गेट योर हेल्थ कार्ड, बट नाउ देयर इज नो वेटिंग फॉर हेल्थ कवरेजेस. एज सून एज यू लैंड टू कैनेडा, apply for health card and your health card will be active. आपने सब कुछ कर लिया and you are living in your Airbnb, but you need your accommodation. So as soon as you land to Canada, ये सारी चीजें simultaneously आपको करनी पड़ेंगी so that your life is hassle free in a week or 2. तो आपको एक अकोमोडेशन भी चाहिए होगा, क्योंकि एयरबीएनबीज आर मोस्टली एक्सपेंसिव, और आपको घर जो पड़ेगा या फिर कोई भी अपार्टमेंट में आप रहते हो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा. सो इट्स एडवाइजेबल टू स्टार्ट फाइंडिंग योर हाउस, और जो भी है आप शॉर्टलिस्ट कर लो. जैसे देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स, फॉर एग्जांपल यू हैव किजीजी, यू हैव क्रेगलिस्ट, और वैसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू फाइंड योर न्यू हाउस और योर अपार्टमेंट. तो मेरा एडवाइस ये होगा कि जैसे आप इंडिया में रहते हो एंड यू आर प्लानिंग कि हाँ मुझे इस दिन लैंड करना है, स्टार्ट फाइंडिंग हाउस और सिलेक्ट करके शॉर्टलिस्ट करके रख लो. एंड नेवर एवर पे एनीथिंग फ्रॉम इंडिया विदाउट हैविंग अ लुक एट द हाउस. ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं कि लोगों ने वहां से, सो दैट वो जैसे लैंड करें वो नए वाले घर में ही एंटर करें, वहां से इंडिया से या फिर आप जिस भी कंट्री से आ रहे हो आप वहां से पे कर देते हो, एंड देन वंस यू कम हियर ईदर वहां पे कोई ऐसा घर ही नहीं होता, या फिर आपने जो देखा है ऑनलाइन वैसा वो नहीं होता. एंड ऑल्सो हियर यू विल हैव टू मेक सम एडवांस पेमेंट एज वेल एज आपको यहाँ 6 months या 1 year का जो लीज साइन करना होता है, तो यू विल बी स्टक इन दैट. सो द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव इज लैंड हियर, स्टे इन एयरबीएनबी और होटल ऑफ योर चॉइस, एंड देन आप जितनी भी शॉर्टलिस्ट करके अपनी कंट्री से लेकर आए हो घर, एंड ऑल्सो शॉर्टलिस्ट योर हाउसेज हियर व्हेन यू लैंड टू कैनेडा. And then start looking at those, start booking appointment, calling them, and within a day or 2 after landing here, आप start करो उनको visit करना and see what are their lease terms and what are the terms of eviction. क्या वो evict कर सकते हैं, आप अगर छोड़ोगे तो कितने दिनों का आपको deposit
मिलेगा, या फिर सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंडीशंस हैं, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दोज. और जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो यू रीड दोज. यूजुअली हम कंडीशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते, बट हियर इन कैनेडा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको 6 मंथ से 1 ईयर तक यू विल बी स्टक इन दैट अपार्टमेंट. तो you have to read, you have to go through each and every word so that you will not get scammed और आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो. You understand your rights as well, कि एज अ रेंटर आपके राइट्स क्या होते हैं. तो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है. एंड अगेन, never ever pay anything when you are in your home country. When you land here, only after looking at the house or apartment or condo, then sign the lease and then make the payment. If you know which city you are landing, जो कि आपको पता ही होगा, तो just go to rentseeker.ca, which is this. And I'm also going to put that link in the description box. आप उस rentseeker.ca पे जाके देख सकते हो कि अलग अलग cities में रेंट ट्रेंड क्या चल रहा है. Next important thing that you have to do is apply for utilities. So for example, you are moving to a new apartment and you will have your hydro bill, you will have all other things that you have to pay. So make sure कि आप उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करो so that you'll be able to make your payment on time. Next important thing that you have to do, if you have a child, if you have a kid or you have kids, you need to apply for CCB, which is child care benefits. So आपके पास सारी चीज़ें हैं. You need to have your SIN for sure for CCB. So make sure that you have your SIN, your all other documents aligned with you, and then apply for child care benefit, because here in Canada government helps you if you have low income or if you have certain amount that comes under a certain income that is decided by government. For example, मैं एक example just दे रही हूँ, hypothetical situation कि let's say your income is 10,000 और आपके income के according हो सकता है आपको 500 पर मंथ अपने बच्चे के लिए मिले या फिर 300 पर मंथ मिले. तो जितना ज़्यादा आपका income होगा CCB आपको उतना ही कम मिलेगा, और जितना कम आपका होगा CCB उतना ज़्यादा होगा. So basically Canada government is helping you to raise your kid. So that's CCB, and that is very important for you to know कि आप कितने के लिए eligible हैं, and apply as soon as you land in Canada. As soon as you land to Canada, it is very important for you to have your driving license, क्योंकि Canada में आपको गाड़ी की ज़रूरत होती ही होती है. If you are living in downtown, that is not the case. आप easily without a car रह सकते हो. That is not very important. But when you have a kid, you are not staying in downtown. You are staying in some suburbs. You need to have your car, and also it's an important ID to have in Canada and in anywhere in the world. बेसिकली सो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जैसे आप आते हो, आइडियली यू शुड अप्लाई फॉर दैट. और उसमें बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल इन ओंटारियो इट इज G1 एंड G2 लेवल, तो एंड G द फाइनल लेवल. सो आपको वो सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए. एंड समटाइम इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. एंड डिफिकल्ट इन द सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, बट द रूल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. एंड आप छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो हो सकता है आपको ड्राइविंग लाइसेंस ना मिले. सो जस्ट मेक श्योर कि आप जैसे आते हो यू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, यू रीड ऑल द रूल्स एंड यू जस्ट लर्न ड्राइविंग इन अ वेरी गुड वे, सो दैट आपका ड्राइविंग टेस्ट पास हो जाए एंड यू गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस. The other thing is your transit card. It's very important for you to have, क्योंकि not necessarily always you will have your car as soon as you land in Canada. और आप तुरंत ही आके कार रेंट पे लेना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सो ट्रांजिट कार्ड एक्चुअली बहुत अच्छा होता है आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में. यहाँ पे कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, कनेक्टिविटी एक सिटी से दूसरी सिटी में बहुत अच्छी होती है. सो यू नीड टू हैव योर ट्रांजिट कार्ड सो दैट आप बसेस में, ट्रेन्स में ईजिली स्मूथली ट्रैवल कर सकें. So the 10th important thing that you should do is get support from settlement services. So in Canada, जब आप land होते हो, even before landing, you can go to different websites जो settlement services के होते हैं. They will help you in settling you to Canada. So आपको उनसे बहुत सारी help मिलेगी. For example, if you want to get a job, they will help you in that as well. Basically, they will help you settling in Canada. So make sure कि आप जहाँ भी आ रहे हो वहाँ जो आपकी locality की settlement service है
आप उनसे कांटेक्ट में रहो एंड बिफोर लैंडिंग एंड आफ्टर लैंडिंग प्रोसेस में वो पूरी आपकी हेल्प करेंगे. सो वी हैव डिस्कस्ड 10 important things that you must do after landing to Canada within a week. But there is one more point that I would like to discuss is if you don't already have a job, start searching your job as soon as you land to Canada. In fact, I would say आप अगर इंडिया में ही हो, start making connection before even coming to Canada. Start making connections on LinkedIn, start making connections on different platforms. So we have a video how to get a job in Canada when you are sitting in your home country. So there are various ways that you can get a job. So we got our job when we were sitting in India, and we got 2 jobs, one for me and one for Gaurav. And we came here with that job. So it was very fortunate. We were very fortunate. And nowadays I'm seeing that a lot of different people that are coming here in Canada, they are coming with job. So it's not very difficult nowadays to get a job if you are skilled. So make sure कि आप आने से पहले बहुत सारे connections बनाएं and if you are able to get your job it's good. If not, then जैसे आप यहाँ पे land करते हैं, start applying to all different portals. And if you don't know what are the different portals that you need to apply on, we have a video I'll link here and I'll also give the link in the description box. How to get a job in Canada. उसमें सारे portals के बारे में बताया हुआ है and different processes that we followed and we found very helpful in getting our job. So just follow that video as well. It will be very helpful. And I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. I know हम लोग बहुत दिनों से गायब हैं, बहुत महीनों से गायब हैं and we have been promising you कि हम बहुत सारे content लेकर आएंगे. But I think if you are following us, you might know that हमारा बहुत ज़्यादा busy time चल रहा था and from last 1.5 years we have been busy moving from one city to another and with a baby. So on top of that, if you have a baby and 3 months old baby, it gets very difficult for you to manage multiple things. So when we were moving from Vancouver to Ontario, Kiana, my baby was 3 months old, or it was very very difficult to manage all of those things like packing, वहाँ से यहाँ आना, and then we bought a house here. So managing all those things were very difficult. So you can imagine we had a lot of contents, but हम कुछ बना नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था. But now we have decided कि हम कम बैक कर रहे हैं और हम आपके लिए जितने भी कंटेंट हो सकते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पता है, नॉट नेसेसरली वीज़ा बट अबाउट कैनेडा, अबाउट एनी अदर थिंग्स दैट यू वांट अस टू रिसर्च एंड लेट यू नो, वी विल बी एबल टू डू इट. और हम अब पूरी मेहनत वापस से करने वाले हैं एंड वी आर बैक विद अ बैंग. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई विल सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.